फ्रिक्शन में से क्वेश्चन नंबर 15. I'll read the question here. The frictional coefficient between the athlete's shoe and the ground is 0.90. Suppose the Superman wears his shoes and races for 50 meters. There is no upper limit on his capacity of running at high speeds. Find A. The minimum time he'll have to take to complete this 50 meters starting from the rest. Suppose he takes exactly minimum time to complete the 50 meter. What is the minimum time he'll take to stop? Okay. How do we proceed? First of all, suppose this is the athlete. He is running. I'll draw the free body diagram of this athlete. उसके सब जो शूज है जिसके बदौलत वो भाग रहा है. ठीक है? What are the forces acting on this here? Free body diagram of athlete. FPD of Superman. FPD of Superman. चलिए बताइए. पहले तो होगा weight, which is acting vertically downwards. W is equal to mg. सही है? This is acting vertically downwards ऐसे. That is the normal reaction. Okay, this is the normal reaction R. Now let us say that he is running in this direction. This is the direction of motion. अगर ये है motion का direction, अगर ये है motion का direction, तो friction will always oppose. हाँ? अगर ये ऐसे, so when he is running like this, we say, see, अगर वो इस direction में जा रहा है, तो when I'm running in that direction, तो मेरा जो शूज है वो क्या करेगा? जो शूज है वो ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा. यहाँ पर शूज इज अप्लाइंग द फोर्स. आई एम ट्राइंग टू अप्लाई द फोर्स लाइक दिस. So the force of friction is acting in this direction. Are you understanding what I'm saying? Yes. Please understand this. This is very important thing in this question. अगर motion इस direction में है तो मेरा शूज जो है वो ग्रिप करेगा ग्राउंड के साथ. तो शूज जब अगर ग्राउंड के साथ ग्रिप करेगा तो मेरा शूज उस ग्राउंड को ऐसे पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा और ग्राउंड फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में देगा. अगर फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है तो वहाँ पे स्लाइडिंग होगा. यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर रिलेटिव मोशन होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दूसरे डायरेक्शन. समझ में आया? सो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. I'll call this force of friction as Fr. That is equal to mu into R, but R is equal to mg, so that is equal to mu mg. समझ में आ गई बात? Okay. Now, so the motion is in that direction. बराबर है क्या? Yes. Isn't it? और यही एक अकेला फोर्स है जिसके बदौलत वो भाग सकता है. अगर फ्रिक्शन ना हो तो he cannot run. Isn't it? बराबर है क्या? So अगर मोशन उधर है तो this is the force and this F is equal to MA will be acting in the this is MA. ये assumed force है. समझ में आ गया? This is the unbalanced force, this F. So what will be the equation of equilibrium here? Mu mg m gets cancelled. So वो डिपेंड नहीं करेगा कि मास क्या है उसका. So what will be acceleration? mu times g, मतलब 0.9 into 9.8. समझ में आ रहा है क्या? Yes. या तो मैं उसको 10 ले लेता हूँ. 10. So this is equal to 9 meter per second square. This is the acceleration with which he will run. Is this okay? Superman will run. लेकिन उन्होंने अपने को टाइम पूछा है. वही इसने भागना शुरू कर दिया. This is the initial velocity u is equal to 0. उसके पास acceleration है 9 meter per second square का. And he has to complete the displacement s is equal to 50 meter. तो उसके लिए उसको टाइम कितना लगेगा? For minimum time, the acceleration is maximum और यही है वो maximum acceleration. Is this okay? Yes. So he'll be running with this acceleration throughout क्योंकि वो सुपरमैन है. So अब इनको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. Initial velocity 0 है ये तो गया. S 50 meter. Half acceleration 9 and time तो find out करना है मुझे. So this will be 100 upon 9. This t square is equal to 100 upon 9 square root होगा. Minimum time it takes to complete is equal to 10 by 3.
10 by 3 seconds. 3.3333 seconds. Is this okay? So this much time he will take to complete. Now that is the A part of it. अब अगर वो रोकना चाहता है तो रुकने के लिए भी उतना ही उसको डिसेलरेशन मिलेगा ग्रिप की वजह से. सेम शूज, सेम रोड, सेम सुपरमैन. सो व्हाइल स्टॉपिंग, अब वो कितना वेलोसिटी अचीव करेगा इसमें, वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा. आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ही अचीव्स इन दिस. So I'll say v is equal to u plus 80. Final velocity I don't know. Initial velocity is 0. Acceleration is 10 by 3. Sorry, 10 by 3. कितना acceleration 9. Acceleration is 9, and this is 10 by 3. So 3 3s are 9. So the velocity he achieves by the time he completes 50 meter is 30 meter per second. अब उसको यहाँ पर उसका velocity है 30 meter per second. यहाँ से उसको अब आगे जाके रुकना है. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन था, यहाँ पर उतना ही, लेकिन वो डिसेलरेशन होगा -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस फर्दर. तो ये अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगा 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ का फाइनल वेलोसिटी है, एंड v इज इक्वल टू 0. इजंट इट सर? समझे? तो यहाँ से वहाँ तो नाउ आई से दैट v स्क्वायर नो v इज इक्वल टू u प्लस 80. अब मेरे को t मिनिमम चाहिए, उसको रुकने के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट? So v is equal to u plus 80. Final velocity is 0. Initial velocity is 30. Acceleration is -9, and time I have to calculate. So 90 is equal to 30, and t minimum that he takes to stop is 30 upon 9 seconds. 30 upon 9 seconds, or is equal to 10 by 3 seconds, and that is equal to 3.33 seconds. Is this okay? Any doubts about that? So you can take the screenshot of this. Yeah. Question number 16. Let us read. A car is going at a speed of 21.6 km per hour. Okay. This is going at 21.6 km per hour. Okay. When it encounters a 12.8 meter long slope at an angle of 30 degree. यहाँ से उसको 12.8 मीटर का स्लोप दिखा, which is at an angle of 30 degree. The friction coefficient between the road and the tire is 1/2 root 3. Mu is equal to 1/2 root 3. It has to do something with this angle of 30 degree. Root 3 is there, you see. Show that no matter how hard the driver applies the brakes, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 km per hour. यहाँ पर पहुँचते समय इसका स्पीड जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 36 किलोमीटर पर आवर. ये हमको प्रूव करना है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. टू प्रूव दैट दिस स्पीड इज ग्रेटर देन 36 किलोमीटर, टेक g इज इक्वल टू 10. ऑलराइट, सो we'll draw the free body diagram of this car, the vehicle here. Let's see. Yeah. Suppose ये कार कुछ इस प्रकार जा रहा है. First is acting weight, mg. W is equal to mg. This weight will be resolved. एक होगा परपेंडिकुलर टू दिस और दूसरा होगा पैरेलल टू दिस. This angle is 30, this angle is 30. You tell me what is this component and tell me what is this component. Okay, so this will become mg cos theta and this is mg sin theta. Okay. अब मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताइए कैसे होगा. What will be? There will be the normal reaction, of course. I'll show the normal reaction here. This is the normal reaction. It is normal, that is perpendicular to the supporting surface R. And this R is equal to mg cos 30. Fine. Now it comes, the motion is in this direction. This is the direction of motion of the car. कार का भी ऐसे ही होगा. कार का जब पहिया, तो कार का पहिया उसको ऐसे हाँ ऐसे करेगा, जस्ट लाइक व्हेन वी आर रनिंग और वॉकिंग. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन दिस केस आल्सो.
व्हेन यू वांट टू मूव इट, बराबर है क्या? अदरवाइज वो स्लिप होगा तो कार का पहिया इसको ऐसे नीचे इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एट दिस पॉइंट देयर विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज गिवन बाय कितना, न्यू टाइम्स Fr is equal to न्यू टाइम्स R, मतलब न्यू टाइम्स mg cos 30, mg cos 30. Is this clear to you? Okay. तो ये दोनों फोर्सेस मिला के उसको नीचे खींच रहे हैं. दैट इज द इफेक्टिव फोर्स. दैट इज द इफेक्टिव फोर्स. एंड दैट F is equal to ma. That F is equal to ma. Yes or no? Yes. Isn't it? So let us write down this equation. What do we get there? This will become, follow. I'll directly write down the equation here. ma is equal to this plus this. दोनों एक ही डायरेक्शन में. पहला होगा mg sin 30 plus mu times mg cos 30. Can I cancel m throughout? Yes. So यहाँ से मुझे acceleration मिल जाएगा. What is acceleration? Acceleration a is equal to, उन्होंने बोल दिया take g is equal to 10. Sin 30 is half plus mu is 1/2 root 3, which is properly 10 into 10, and this is root 3 by 2. So this root 3 cancel. Yes. बराबर है क्या? So this is 5 plus 2 5 5 by 2, मतलब 2.5. So this is equal to 7.5 meter per second square. This is the acceleration with which the body is going to run. The vehicle is going to go down. Is this okay? Is that clear? Yes. And it has a displacement of this. It has a displacement of this. अब उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितना है? यहाँ का वेलोसिटी उसका, दिस इज u. यहाँ का वेलोसिटी, व्हाट इज u इज इक्वल टू 21.6 into 5 by 80 meter per second. Now 9 2s are 18, 3 4 are, huh? 12. So u is equal to 12 5 is 60, 6 meter per second. This is the initial velocity. हाँ? फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है कि भाई ये ज़्यादा होगा इससे. So I use the formula v square is equal to u square plus 2as. Okay. Final velocity I will calculate. Isn't it? U square. What is u square? 36 plus 2a is 7.5 and displacement 12.8. Calci please. So this is 36. 7.5 का डबल होगा 15. 15 into 12.8. मेरे ख्याल से 15 का टेबल आता है. So 36 plus 12, 42, 4, 192 plus 36, 8, 228. So square root of 228 होगा velocity. Now that will be in meter per second. बराबर है? So what is the velocity that we get there? V is equal to square root of 228. 228. So it will be 14 point something. 15 point something. Yeah, 15, almost 15. 15.0 होगा शायद. 15.0. 15 मीटर पर सेकेंड. लेकिन वो मुझे किलोमीटर पर आवर में चेक करना है. So I'll multiply it by 18/5. 15 into 18/5. 5 3s are 15. So this is 54 kilometer per hour. And this velocity is much greater than 36 km per hour. So that proves the first part. Well, they can also ask us what is the final velocity. This can be the question. So this is the final velocity. This square. Is the harder the wait, we'll have to have a correction here. Actually, the force of friction is in the direction of motion when the speed is increasing. When you are taking the grip, when you are accelerating. During braking, ये जो force of friction है, ये force of friction opposite direction में act करेगा.
during braking. Force of friction due to braking. Force of friction इस डायरेक्शन में कब एक्ट करेगा? When we are increasing the speed. लेकिन ये करते समय, रोकते समय वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. प्लीज रिमेंबर दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट वी मेड मिस्टेक. ये होगा म्यू आर दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos 30. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ma के साथ रहेगा. मतलब ये माइनस होगा, जब ये माइनस होगा, जब ये माइनस होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2.5. So that is 2.5. ये भी 2.5 होगा. ये 2.5 होगा तो ये 5 होगा. ये 5 होगा तो ये कितना होगा? प्लस 64, 30, दिस इज 100. अगर ये 100 है तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब 10 into 5/18 5 to the. So this is going to be 36 km/h. मतलब ज़्यादा अगर फुल ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इतना स्पीड होगा, अगर कम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो इससे कम होगा स्पीड. इज दिस क्लियर? आई मेड अ मिस्टेक हियर. ड्यूरिंग ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. इज दिस ओके? या. प्लीज नोट दिस. You can remember this concept by simple diagram here. If this is the vehicle, there are two cases. This is one more vehicle. दोनों vehicle इसी direction में जा रहे हैं. Direction of motion. Only the thing is that ये है accelerate करने वाला vehicle. और ये है जिसमें ब्रेक अप्लाई किए गए, ब्रेकिंग में. तो दोनों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा बताओ? एक्सीलरेशन के टाइम पे आगे होगा. करेक्ट. ड्यूरिंग द एक्सीलरेशन दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ब्रेकिंग के टाइम पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट होगा. दिस इज ओके. इम्पोर्टेंट थिंग. वेल, क्वेश्चन नंबर 17. A car starts from rest. U is equal to 0 on a half a kilometer long bridge. Okay, displacement is 0.5 kilometer long bridge. The coefficient of friction between the tire and the road is 1. U is equal to 1. Okay, so that one cannot drive through the bridge in less than 10 seconds. To prove the time taken to cross the bridge is more than 10 seconds. ये प्रूव करना है. क्वेश्चन समझ में आ गया? Is this okay? We'll draw the free body diagram of this vehicle. So first thing, weight acting vertically down. W is equal to mg. आप वेट यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ, कहीं भी दिखा सकते हो. ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन R. And basically R is equal to mg, no? R, this R is equal to mg. Now the car is accelerating. This is the direction of motion, and as I told you that this is the accelerating motion of the car. The car is accelerating. It starts from rest, we see. So what is the direction of the friction? Accelerating. In the direction, right? This is the direction of the friction, Fr. And this Fr is equal to mu times normal reaction, but normal reaction is equal to mg, so it will be mu times mg. But mu is equal to 1, so this is equal to 1 mg. Is this okay? And well, this is the force which is driving force here. Frictional force है, इसी वजह से जा रहा है. And F is equal to ma, so I'll say this is ma. तो क्या बन जाएगा? ma is equal to 1 mg. So acceleration is equal to 10 meter per second square. You see? Now they say to prove that it will take more than 10 seconds to cover the distance of 0.5 kilometers. So I know S, U. S is known, U is known, T we have to find out. I'll use the formula S is equal to UT plus half AT square. S is 500 meter. 0. This is 0. Half. Acceleration is 10.
and time I have to calculate. 2 5s are and 500 are. So t square D is equal to 100 और t is equal to 10 seconds. So minimum 10 seconds तो उसको लगने ही लगने हैं. और अगर वो पूरी तरह से नहीं एक्सेलरेट करेगा तो ये एक्सेलरेशन कम होगा और टाइम ज़्यादा रहेगा. Are you understanding what I'm saying there? Isn't it? So that's what improve. Any doubts about that? ठीक है? Question number 18. This is the diagram. I'll read the question. Figure shows two blocks in contact sliding down an inclined surface of an inclination 30 degree. So they are sliding down already. This is the direction of motion. They are already sliding down. The friction coefficient between the block of mass 2 kg and the incline is mu1 and that between the block of mass 4 kg and the incline is mu2. Calculate the acceleration of 2 kg block if calculate the acceleration of 2 kg block. We call this as A1. If A, what is that first part? If mu1 is equal to 0.2, mu1 is equal to 0.2 and mu2 is equal to 0.3. mu2 is equal to 0.3 and B mu1 is 0.3 mu1 is 0.3 and mu2 is 0.2. This is correct. Given that G is equal to 10 मीटर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन समझ में आ गया? mu1 और mu2 के दो वैल्यूज दिए हैं, दो सेट्स ऑफ वैल्यूज दिए हैं. इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg block. Okay? We'll draw the free body diagram of each of these blocks. Well, let's consider 4 kg block first. Solution. First part, जिसमें mu1 is 0.2 and mu2 is 0.3. Let's say, ठीक है? So let's say I'll draw here free body diagram of 4 kg block. चलिए बताइए क्या क्या आएगा इसके अंदर. क्या होगा? mg 4 kg block. W is equal to mg. W is equal to mg is equal to 4g. R 4 into 10. 40 Newton. Can I say so? yes Okay. Next. Now let me resolve this. that is all. Resolve this. Perpendicular to the block. Parallel to the block. अगर ये theta है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री. So this is 40 cos 30 and this is 40 sin 30 sin 30. friction Okay, this block is already moving, motion में है. अगर ये motion में है तो friction उसको oppose करेगा. याद रखो. अगर मोशन शुरू नहीं हो रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. मोशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है. सो द फ्रिक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन स्ट्रिक्टली. इज दिस ओके? yes सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. वो जो व्हीकल का और इसका है कि उसमें स्किडिंग नहीं होता है. दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन. नाउ दिस इज इक्वल टू आई हैव टू शो हियर द नॉर्मल रिएक्शन आल्सो. द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. सो दिस R is the normal reaction. And simply this R is equal to, बोलो, R is equal to 4 cos 40 cos 30. Get up, 40 cos get up, get up. Now this is the friction, FR. What is FR is equal to mu 2, 2, mu 2 R. That is equal to mu 2. What is mu 2 here? 0.3 40 cos 30 into 40 cos 30. Is this okay? yes And this block is already in the motion. yes so ma will be 40 Yeah, so what will be the direction of MA? ये रहा MA, MA और M2A. That is equal to 4A. Is this okay? yes Now tell me the equation. 1, 2 और 3. 40 sin 30 40 sin 30 is equal to 4a 4A plus 0.3 40 cos 30 plus 0.3 40 cos 30 40 cos 30. Very good. Can I cancel 4 throughout? 4, 4 and 4. तो यहाँ पर 10 बचेगा 10. Yes or no? हाँ 10 sin 30.
मतलब 10 into half and is equal to a A plus 0.3 into 3. 10 is 3 and cos 30 3 by is root 3 by 2. to do cancel. नहीं होता इधर a by 2 अरे होगा. हाँ So this is 5. Acceleration a is equal to क्या बन जाएगा? This acceleration is equal to a is equal to 5 into 3 So what do you get there? Oh, wait, we have forgotten one thing. We have forgotten one thing. One second. हमने क्या यहाँ पे बोल किया? They are in contact with each other, ना? हाँ so उसका So there will be the reaction from this. है ना? दोनों भी ये कर रहे हैं. There has to be the reaction from this. वो reaction हमको यहाँ पे नहीं लिया हमने. So there will be the reaction P. यहाँ पे. So this is P. यहाँ पर होगा वो reaction. बराबर है क्या? ऐसे. I'll show it over here. This is the reaction from block 2 kg. This is reaction from 2 kg block. 2 kg block. अब इक्वेशन क्या आएगा? P plus 40 sin 30 is equal to 4a plus 0.3 40 cos 30. This is what we get there. Correct, na? So what equation I write here? P in plus 40 into half is equal to 4a plus 12 cos 30. Correct? 12 cos 30. Cos 30 को मैं लिख सकता हूँ root 3 by 2. So this is 6 and this is 20. So P is equal to 4a plus 6 root 3 minus 20. Equation 1. Is this okay? yes Okay. Now I'll write down the free body diagram of the second one. So 2 kg one. LPD of 2 kg block. Free body diagram of 2 kg block. बोलो क्या आएगा यहाँ पर? क्या फोर्सेस? बिल्कुल वैसे ही फोर्सेस आएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है. Only the thing. So this is the weight acting downwards. W is equal to mg is equal to 2g is equal to 20. Okay? इसको रिजॉल्व करते हैं. This is one component, this is दूसरा component. ये 30 है तो ये भी 30 है. So this is 20 cos 30 and this is 20 sin 30. Okay? Of course the friction is acting in the upward direction और यहाँ पर एक normal reaction होगा. This is the normal reaction R, but this R is equal to 20 cos 30. Correct? And there is the force of friction which is acting in the opposite direction is Fr is equal to mu1 R. Now mu1 in this case is 0.2. 0.2 times 0.2 times 1 2 times R that is 20 cos 30. 20 cos 30. Correct? yes Okay. अब जैसे ये इसको पुश करेगा, ये वाला ब्लॉक इसको भी पुश करेगा ना, एक्शन रिएक्शन. When I am drawing the free body diagram of 4 kg block, 4 kg block का जब मैं free body diagram ड्रॉ करूँगा, so this is the reaction given by 2 kg block. And when I am drawing the free body diagram of 2 kg block, तो यही reaction यहाँ पर इस प्रकार होगा. Is this clear? Okay. Very important. ये जो P मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये है 4 kg block, and this is the reaction given by 2 kg block. और अगर ये 2 kg है तो this is the reaction given by the 4 kg block. This reaction is equal, same. When they are put together, they will cancel each other. Is this okay? Right? So यहाँ पर ये P होगा. और इस सब के बावजूद the motion is all taking place in this direction. This is the direction of motion with certain acceleration. If it is so, then the F is equal to ma will be acting in the opposite direction. So this is the direction of ma. Ma मतलब 2a. Correct? yes Tell me the equation now. Downward, upward, upward, upward. Downward सिर्फ एक ही force. 20 sin 30 20 sin 30
is equal to P P plus 2A plus 2A plus 0.220 plus 0.2 into 20, 2 to the 4, 4 ले लूँगे, 4 cos 30. Is this okay? yes. Alright, now let me substitute the values there. ये क्या बन जाएगा? P is equal to 2A plus, yeah, that's correct. So what do you get there? Let me solve both these equations. For and यहाँ से मैं P को निकाल बाहर करूँगा. So what is P is equal to? यहाँ से मिलेगा 20 sin 30 is 10 minus 2A minus 4 root 3 by 2 2 to the. So this is equation number 2. P is equal to 10 minus 2A minus 2 root 3. Equation number 2. And this is equation number 1. Is this okay? Yes. Let me equate these equations. दोनों को equate करेंगे तो क्या मिल जाएगा बताओ. This will become from 4A plus 6 root 3 minus 20. is equal to 10 minus 2A minus 2 root 3. Okay. 6A is equal to बोलो 6A is equal to 30 30 minus 2 root 3 minus 6 root 8 minus 8 root. बराबर है क्या? So divide throughout by 6. So A is equal to 5 minus 2 3s are and 2 4s are. बराबर है क्या? 4 upon root 3. Whatever. Isn't it? So let us substitute the values and get me the answer here. 4 upon root 3 कितना आता है? Calculator please. Get me the calci please. So when we calculate, it is 2.7 meter per second square. So this is the acceleration with which both the blocks will move together. Is that okay? Is this okay? yes. Cool. Now let us go for B portion. B part of it. B. You see, in A part, this friction is more. yes. And mu 2 is, sorry, in A part, mu 1 is 0.2 and mu 2 is 0.3. बराबर है? जिसका फ्रिक्शन कम है वो स्पीड ज्यादा पकड़ने की कोशिश करेगा, हाँ right. लेकिन ये उसको रोक रहा है. यहाँ का फ्रिक्शन कम है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है, ये रफ है, तो ये अटक रहा है, लेकिन ये उसके ऊपर आके बैंग हो रहा है. बैंग की वजह से वहां पर ये रिएक्शन हो जाएगा. In this second part B, if you see, mu 1 is 0.3 and mu 2 is 0.2, तो this is smooth और ये आगे चला जाएगा और ये दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे. And the P will not be P will not be there. तो मुझे सिर्फ acceleration of this 2 kg block find out करना है. So when we solve the second part, I will draw only the free body diagram of 2 kg block. 2 kg block only. okay. और इसमें no reaction P. They will separate from each other. And I'll give it to you for the homework. ठीक है? इसमें P नहीं होगा, सॉल्व करो इसको. या तो फिर इस डायरेक्ट इक्वेशन को ले लो. You can do it here itself. यहाँ से P को हटा दो, ये इक्वेशन ले लो डायरेक्ट. Right? So 2A is equal to 10 minus 2 root 3 और A is equal to 5 minus root 3 और 5 minus 1.732 कितना आएगा? 5 minus 10 में से 2 गया, 10 में से 3 गया, 7 3.268 3.268 meter per second square. This is the acceleration. Is this okay? no. You have to take the correct value of mu. Mu का value correct अगर आप लेते हो तो this will become 0.3. 0.3 बराबर है क्या? So this will become 3 to the 6. So 6 cos 30 हो जाएगा. 6 cos 30. 6 तो ये 3 हो जाएगा. 3 root 3. This will become 3 root 3. Yeah. 3 root 3. Now just simplify this. 5 minus कैलकुलेट कर दो. इसमें आएगा A is equal to 5 minus 1.5 root 3.
5 minus 1.5 into 1.732 5 क्या आएगा कैलकुलेटर? The answer comes out to be A is equal to 2.4 meter per second square. Is this okay? Please check and take the screenshot. Read question number 19 now. It says two masses M1 and M2 are connected by a light rod and the system is slipping down the rough incline of an angle theta with the horizontal. The friction coefficient at both the contacts is mu. Friction coefficient is mu and mu. Okay. Find the acceleration of the system and the force by the rod on one of the blocks. Acceleration of the system and force by the rod on the blocks. अब ये जो force है जो भी कुछ उसको मैं T बोलूँगा. Let us draw the free body diagram The of last question. 1, 2, 3. both the rods. Let us draw the free body diagram of both the rods. बता दो क्या होगा बता दो. This system is sliding down. ऐसा slide कर रहा है system. So ऐसे free body diagram of M1 क्या होगा बता दो. पहले W. is equal to M1G. Yes. This is the angle theta. आगे बोलो. Resolution. Resolve. So resolution will be like this and like this. अगर ये थीटा है तो ये थीटा है. So this is M1G cos theta. cos theta. And what about this? M1G sin theta. M1G sin theta. Then the system is going down. There will be the reaction. There are two reactions possible. पहला तो है normal reaction. Let me call this normal reaction as R1. Yes. And this R1 is equal to M1G cos theta. Then this rod is there. ये जो rod है ये rod भी इसको push करेगा with certain force T. Yes or no? Yes. Isn't it? There is a push from this rod. Isn't it? और फिर वहाँ पर होगा एक friction because it is sliding down. The motion is in the downward direction. This is the direction of motion. So अगर ये है direction of motion, then this will be the friction at the interface, and this Fr is equal to mu times the normal reaction 1. That is equal to mu times M1G cos theta. Agree? Yes. इस सब के बावजूद this system is going down. So F is equal to ma. Amen. So I say this ma is acting in this direction. Yes. This is m1a. और यही acceleration अपने को find out करना है. So tell me the equation that you get there now. M1G sin theta m1g sin theta is equal to M1A और इसके साथ t भी आएगा plus t is equal to M1A m1a plus mu M1G m1g cos theta. This is equation 1. Is this okay? Similarly, देखिए अगर मैं रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, दिस इज द रॉड, तो ये रॉड के ऊपर यहाँ पर अगर थ्रस्ट या फोर्स टी है यहाँ से, तो उतना ही फोर्स इधर से भी होगा. दैट्स इट. बाकी रॉड का कोई काम नहीं है. और ये रॉड बिल्कुल ऐसा ही थ्रस्ट इसके ऊपर भी अप्लाई करेगा. सो आई कैन ओमिट दिस. So the second part is free body diagram of M2. Same, बिल्कुल उसी तरह से होगा, बिल्कुल उसी तरह से होगा. So क्या we know, अगर ये है M2, this is angle theta, so this is M2W is equal to M2G. इसको हम रिजॉल्व करेंगे ऐसे और वैसे थीटा. So this is M2G cos theta and this is M2G sin theta. आगे बताओ. There will be the reaction on the supporting surface. Let me call this as R2, and this R2 is equal to M2G
cos theta. Okay, plus there will be the thrust by this rod. Rod उसको ऐसे ही करेगा, this side. हाँ इस साइड में. हाँ. Okay, so this is the thrust by the rod, जो कि यहाँ पर ऐसे ऐड करेगा. ऐसे this is m1g cos theta और ये thrust होगा t और ये होगा m1g. बराबर है? And there will be the friction because this total system is going in the downward direction again. नीचे जा रहा है, so there will be the force of friction in the opposite direction. This is equal to Fr and that is equal to mu times the normal reaction. That is equal to mu times m2g cos theta. इस सब के बावजूद ये फोर्स ये बॉडी नीचे मूव हो रहा है, तो there has to be F is equal to ma m2a. m2a. Now tell me the equations. 1 2 3 T plus t plus m2a m2a plus mu m2g cos theta mu m2 g cos theta is is equal to m2g sin theta. This is equation number 2. I have to solve both these equations to find out a and t, isn't it? ये दो equations मुझे solve करने हैं, isn't it? Equate this for t. t eliminate करेंगे पहले तो acceleration मिल जाएगा. तो what is t is equal to, इसी equation को मैं दोबारा लिखूंगा. What is t is equal to m1a plus m1a mu plus m1 mu m1g cos theta minus minus m1g sin theta. और यहाँ से t क्या होगा बताइए दोबारा. t is equal to m2 g sin theta minus m2a minus mu m2 g cos theta. दोनों t और t इक्वेट करिए. When I equate both these equations, what is this going to give me? m1a plus mu m1g cos theta minus m1g sin theta is equal to m2g sin theta minus m2a minus m2a minus mu m2g cos theta. Isn't it? अब हम क्या करेंगे, ये और ये क्लब करेंगे, इसको इधर लिया जाएगा. ठीक है, यहाँ पर cos थीटा का टर्म है एंड दिस इज cos थीटा का टर्म. बराबर है क्या? yes तो ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा का और यहाँ पे साइन थीटा का टर्म. तो ये मैं इधर लेके आऊंगा और बाकी ये दोनों भी उस तरफ लेके जाएंगे. तो बता दो क्या होगा. ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा. yes m1a plus m2a, take a common, m1 plus m2 plus plus m2 is equal to, अब ये दोनों सब इधर जा रहे हैं तो पहले मैं साइन थीटा वाला टर्म लिखूंगा. ये साइन थीटा और साइन थीटा, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा. g sin theta जी साइन थीटा कॉमन, वेरी करेक्ट. जी साइन थीटा कॉमन, सो वी गेट देयर m1 plus m2. एब्सोल्युटली करेक्ट. ये माइनस है और ये प्लस है, उधर जाके ये भी माइनस ही होने वाला है. ठीक है, तो माइनस. अब इसमें म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा कॉमन आएगा. m1 plus म्यू जी कॉस थीटा m1 plus m. इज दिस ओके? कट कुछ नहीं होगा यहाँ सब, हाँ कट होगा 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 हो गया. m1 plus m2 पूरा कट हो जाएगा. So what is the acceleration with which this is going to travel? g sin theta Correct. I'll take g common from here. So this will become g. I'll take common from here. So this will become a is equal to g common sin theta minus mu cos theta. This is the acceleration of the system. That is the first answer. Now this value of a I will substitute in any of these equations. तो वहाँ से मुझे t मिल जाएगा. Isn't it? So substitute a in equation 1. Substitute a in equation 1. क्या मिल जाएगा देखते हैं. Will give me t t is equal to t is equal to m1 into this m1 g sin theta. minus mu ओपन करके लिखते हैं.
m1 g sin theta minus m1 g mu cos theta. Okay. Isn't it? Right? I'll get it as m1 g sin theta minus m1 g minus mu times m1 g cos theta plus mu m1 g cos theta plus mu m1 g cos theta minus m1 g sin theta minus m1 g sin theta पूरा कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो t इज इक्वल टू 0 आ रहा है. देखो, this gets cancelled, this gets cancelled, and therefore t is equal to 0. There is no reaction between them. Is this okay? This is the Yes. second.